We remember late Krishnachandra Gandhi, who was a great social organizer and perseverer in spreading education in Janajati areas of the Northeast. Born in 1921 in Meerut, Uttar Pradesh, Krishnachandra took an active role in establishing the Saraswati Sishu Mandir in Gorakhpur, the first school of Vidya Bharati. He prepared special schemes for the Northeast. Purvottar Janajati Shiksha Samiti is also its brainchild. As a mark of respect for him, Purvottar Janajati Shiksha Samiti has introduced the Krishnachandra Gandhi Award, which is awarded every year to an eminent social worker, educationist of the Northeast who are working for the Janajatis. This year, it is decided to confer the Krishnachandra Gandhi Award on Sri J.K. Khove of Nagaland for the year 2024 in recognition of his dedicated social service. Sri J.K. Khove is an eminent social worker of Nagaland. He has dedicated his social life for the spread of Hindi education in the state of last few decades. Born on 1st June 1964, Sri J.K. Khove of Nagaland was working in Directorate of School Education in Nagaland and retired as Additional Director Hindi. He obtained MA and B.Ed degree and Hindi diploma. He is the founder of Kohima Indian Teachers Union and he was the first president of that union. He contributed a lot for the spread of Hindi language in Nagaland. He was a very expert in the teacher also. He was associated with SCERT Kohima also and took active part in developing in the textbooks for the classes 5th to 8th. He is known as dedicated propagator and guide of Hindi education in the state of Nagaland. Purvottar Janajati Shiksha Samiti congratulate Sri J.K. Khove. May I humbly request chief guests, guest of honor, invited guests and other dignitaries to present the Krishnachandra Gandhi Award 2024 to Sri J.K. Khove. प्रेस एंड मीडिया, मेरे दोस्त, दुश्मन, सब कुछ, आज भी आपको यहाँ मिलने का मौका मिला, अच्छा लगता हूँ। हमेशा किटपिटा रहते हैं वो लोग, मगर बहुत अच्छे दिखते हैं हम लोगों के।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति पूर्वोत्तर का ये कार्यक्रम पहले बार नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हुआ है। जनजातीय शिक्षा समिति का जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे पिता समान पंकज सिन्हा जी, उनकी अगुवाईता में यहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग नहीं समझते हैं कि संघर्ष क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं संघर्ष कैसा किया जाता है, मगर जनजातीय शिक्षा समिति विद्या भारती नागालैंड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे से भी हो, अपने नागा लोगों की सोच विचार को ख्याल में रखते हुए, हमारी तरह सोचते हुए हर एक कार्यक्रमों को पूरा करते हुए आया है। Let me put it this way. It is of immense, pride as a Naga, as a fellow citizen of Nagaland, when we see the name of Sri Zaki Kuve. His name is quite difficult to pronounce, but I know him very well. He retired as an additional director with the Department of School Education. And for many, many years, he has been really pursuing the pursuit of our Rashtra Bhasha, of our Hindi language in the state of Nagaland. Thank you to the Department of School Education and to the Honorable Advisor for understanding and promoting our mother tongue of Hindi in our state too. And people like the awardee, this award of Krishna Gandhi, Chandra Gandhi Award, immediately I looked at it. थोड़ा बहुत सेल्फिश भी हूं ना, तो मैं देख रहा था यहाँ नागालैंड कहाँ है, आज भी किसी और को देने वाला है क्या। मगर गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे नागा बड़ा भाई भी इस अवार्ड का एक भागीदार है। और सिर्फ आपको नहीं मिला है, हम सबों को मिला है। हमारे नागालैंड प्रदेश की 18 जनजातियों को मिला है और ऐसे बहुत लोग निकल आए ताकि हम लोग अपना समृद्धि तक अपने नागालैंड प्रदेश को उज्जवल नागालैंड प्रदेश बनाने में कोशिश हुआ। National Education Policy 2020, when it was launched, let me be threadbare very clear. When it was launched, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's visionary program, and that time also and today also, Shri Dharmendra Prakash ji was our Honorable Minister, Union Minister. And as far as I know, our most regarded Dr. Raoji, Ramakrishna Raoji, who is the national president of Vidya Bharati, they have envisioned while making this policy that is befitting to build a robust nation. When National Education Policy was launched, there was a lot of hue and cry. नागालैंड में भी बहुत हल्ला गुल्ला हो गया था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेडिशनल वे में चल रहा था, वो बोला नहीं होगा, कैसा चलेगा, कैसा सफल होगा। हमारे जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डरने लगा कि इसमें हिंदुत्व आ जाएगा। थ्रेडबेयर सच्चाई की बात, हम सब हिंदू बनने लगेंगे,
हम क्यों डरते हैं? हम सब तो सनातनी हैं। आज हम लोगों का प्रार्थना की पात्र अलग हो सकते हैं, मगर हम सब भारत देश का नागरिक है। अगर कुछ कमियां हैं तो ये है कि हम लोग अपने विचारों को सही तरीका से नहीं रख पाते। अगर कुछ कमियां हैं तो हम लोग हमारी अधिकारियों से या जो सूझबूझ है इस NEP 2020 पॉलिसी के ऊपर, उनको हम लोग पूछते नहीं है। We come to the conclusion before we even start our journey. I'm not saying that the education policies of the past were bad. No one says that. All of us that are seated here today are a byproduct of that education policy which we inherited from the British. And some good things, some anything. But today, to face the challenges of the 22nd century and forward, for Nagaland, for Assam, for Tripura, for the rest of the country, education system plays pivotal role, the highest role in molding the future of our nation. There is no other system that is more pivotal in reshaping the destiny of a people, the destiny of a nation, than education. The pursuit of seeking knowledge has been there from early man onwards. We don't know which age we are talking about, but from early man onwards, the pursuit of seeking knowledge has been there. Our state too, Nagaland, the 16th state of the Indian Union, in 61 years of our statehood, we are still working hard and struggling. You know how Honorable Advisor, my elder brother, Dr. Yomeje, is trying to bring about a systematic, positive change in the school education. I follow the Department of School Education and Honorable Advisor G's progress in every step. Because if it doesn't start from the school level, how will we be able to build in higher education? It is a chain together. For that also, we are having a lot of issues. But it's good to have issues, positive issues, changing issues, issues that can make us rethink our thought process. We know we are all fighting for infrastructure. We are all fighting for good roads. We are all fighting for more money in our pockets. We are all wanting to buy. Now we have an Innova, next we want to have a Fortuner, next we want to have a Rolls Royce. Not satisfied with rooms that are only 10. We want 20 houses. But if we do not work hard on this NEP 2020, and what our good friend of ours, our most senior Dr. Raoji has said, I was just listening very keenly. If the community is not involved, if the NGOs are not involved, if leaders like all of you are not involved in teaching, in pursuing, government alone cannot do it. The biggest problem that we face today is not wanting to change from status quo. Government adhikari departments, sir, doesn't want to change from the way we are. आराम से हमें डायरेक्टर कब पहुंचेगा, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है. हम लोग मंत्रीगण कितना लंबा बैठेगा वही सोचते हैं हम लोग. All officers, all people, we are easy.
much I know, our seniors have explained on NEP 2020, in tune with the diverse knowledge and people groups of our nation, this would be relevant for all. We have to discourse it in our heart and mind and discourse together also. If there are some things that may not be too suitable for our state of Nagaland, because we have got 1,935, no sir? 1,935 government schools. 1,939. 29. 1,929 government schools in Nagaland. More than 700 private schools in Nagaland. 85 colleges in Nagaland. 5 private universities, 1 central university. Still, the gross enrollment ratio of Nagaland is all derived by the rest of the country. We go together always, try to make our leaders understand. Nagaland is a land of villages. गाँवों का देहात वाला है हम लोग. कोहिमा और दीमापुर सिर्फ 2 जगह में. But here also in Kohima also it consists of villages. The effort of the government of India is also really good. हमारे ऐसा स्कूल है जहाँ 4 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और 12 टीचर्स हैं. ऐसी जगह है. आप सोचिए वो बच्चे कितना बुद्धिमान निकलेगा. वो 12 मास्टर जो है बुला के सिखाता होगा. मगर वो स्थान इतना आसान नहीं है. मैं यहां से दिल्ली जा सकता हूं और वापस आ सकता हूं उसी दिन में, मगर जिस स्थान में वो स्कूल है वहां मैं 1 दिन में क्या 2 दिन में जाके नहीं आ सकते. सरकार हर कोशिश कर रहा है कि शिक्षा ज्ञान सबों को मिले. If school education can do such kind of efforts, then I think to remodel the way of knowledge bank for our people with everything like Dr. Raoji has said, it should be inculcated in the system, in the classroom itself. Vocational studies should be inculcated, and for that teachers have to be the inspiration. For that, teachers have to, already you know every name, every student's name in your classroom, for sure. And you know his or her behavioral instincts and everything. And if we have to make a success of the NEP, then we have to learn ourselves and allow our learning to be uninhibited, without fear or prejudices, without doubt, and instead improvise on the NEP 2020. If you can mold it better than the system without breaking the rule, then I think it is going to be victory for us. So lastly, I always say, we need everything in life, but the nation and the state, the people, the quality of human resource decides the vision of the nation and the state. The quality of the people we build will be the quality of the state, quality of the community, quality of your office, quality of the nation. So it is a privilege for us, for Dr. Yomeji, for myself, for all of us. Even though these are not very popular departments, but these are very, very pivotal departments that will give impetus to the future of our people. Silent workers, we all, but work
for sure. We do vote. So I challenge our Department of School Education, Higher Education, and all of us, all our community, all our leaders, that we should truly make sure that NEP 2020 is implemented. Implemented should not be in the system of papers, but in us. Like my predecessor speaker was saying, the teacher has to be in tune to the NEP. The system of classroom has to be in tune to the NEP. The principal has to be in tune to the NEP. Then it is not a very hard task. I really want to thank Janjati Shiksha Samiti and all of you for coming here to Kohima. I have a request as I end my speech. I pray that आप लोग आते रहे, अवार्ड हर साल नहीं हर क्वार्टरली देते रहे, मगर सिर्फ कोहिमा में नहीं, अगले बार मोगोक्चुंग में, वोखा में, जनबुतो में, ऐसा करके हर समय तो मैं जानता हूँ डॉक्टर राव जी नहीं आ पाएंगे या आप लोग नहीं आ पाएंगे, मगर कोई ना कोई तो आके इस चीज को जिस तरह आज भावनाओं के साथ आपने लेके चला है, उस तरह हमारे राज्य में हर एक जिला में आप हमारे शिक्षकगण जो है और जितने भी अधिकारी उनके साथ बैठे, चाय वाय पिलाना हम दोनों का काम, बाकी सब आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। Late Padma Shri Pyong Temjan Jamir was honored with Padma Shri in 2018. He's a Hindi scholar and teacher in our state. He's taught over 4,000 students. He was with the Department of School Education. And almost 1,000 of these students are Hindi teachers today. On this occasion, it's befitting to talk about some of his achievements, some of his honors that he's received over a lifetime of service in our state. I'll just take a couple of minutes to talk about some of these. He was, a lifelong member of Hum Chalis, Hum Bharatiya Sanstha. He played an active role in it. Along with 40 people of the Sanstha, he continued to serve our country for the progress of our country through use of Hindi. He was a founding member of Mahatma Gandhi International University in Varda in the year 2000. He was a founder of Nagari Lipi Parishad in Nagaland. In the year 2009, he was honored with the title of Founder President of Tribal Education Committee, Nagaland State Committee for Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. He served the Vidya Bharati as the president of the state committee for 9 years. After this, he became a patron of Tribal Education Committee in Nagaland for life, and he continued to guide the committee. He continued visiting schools and expressing his views to teachers, students and parents in accordance with his goal of dedicating Hindi, Nagari script and Mahatma Gandhi. He was a nominated member of the advisory committee of the Ministry of Human Resource Development, the erstwhile Ministry of Education, Government of India, from the year 2012 to 2015. He continued to serve the progress of Hindi across the Northeast. He was a member of the World Hindi Committee. He participated in the 7th World Hindi Conference in Suriname from 5 to 9 June 2003 as a representative of the entire Northeast, and he expressed his views there. He also represented the Northeast in the 9th World Hindi Conference in Johannesburg, South Africa. He got the opportunity to express his thanks and gratitude to the participants from all over the world, and from the platform's conference. He was also honored for his work in service, expansion and development of Hindi. During the 9th World Hindi Conference, he was awarded the District Teacher Award for Dimapur District on Teachers' Day in September 2001. He was also honored with the National Service Award by Baurav DRS Seva Nyas, Lucknow, in March 2005 by the then Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Babulal Gaur. The Janjati Vikas Samiti Nagaland honored him with the Veer Jadonang Award on 29th August 2005. The then Honorable Governor of Nagaland, Shri Shyamal Datta, presented the award. In September 2006, late President of India, Shri Abdul Kalam,
on the occasion of Hindi Divas, honored late Shri Piyong Tanjan Jameer with the Ganga Sharan Singh Award. Member of Parliament Mrs. Nirmala Pandey Haste was also honored with had honored him with the Vinoba Nagari Lipi Saman. Honorable Governor of Nagaland, Sri Shankar Narayan, honored him with the Indira Gandhi National Unity Award on 15 August 2007. Saraswat Cooperative Bank founding member and former MP Eknath Thakur had honored him with One India Award on 15 May 2010. Friendship Forum Delhi had honored Shri Piyong Tanjan Jameer with the Jewel of Northeast Award in 2014. And finally, the Honorable President of India, Ramnath Kovind, had honored him with the Padma Shri Award on 20 March 2018. Shri Piyong Tanjan Jameer had passed away on 12 June 2021, but his life will continue to remain a source of inspiration for all of us here in Nagaland. On this occasion, I'd also want to take a couple of minutes to talk to everyone about the author, who's none other than Shri Pankaj Sinha Saab, who's been working in our state for quite some time now. He was born in Rajoy village in Aurangabad district of Bihar. He's been working in the field of social education for the past 43 years among tribals across the country. In the whole of Northeast, his focus has been Northeast. He has written several books on the life of tribals, and he keeps writing essays on contemporary issues in newspapers and magazines. And Samagra Shiksha Nagaland has sponsored printing of this booklet. We have a Hindi version as well as an English version. So on this befitting occasion, I'd request the honorable guests to please release the book. Thank you. हमारी पूर्वोत्तर शिक्षा समिति का मुख्य उद्देश्य हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, जिससे एक लड़का हमारे संस्थाओं में पढ़ के बड़ा होके वो अपने परिवार को पहचान सकता है। उसको हम इस लायक बनाते हैं कि वो अपने माँ बाप को पहचान सकता है। हम उसे ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो हमारे आसपास के लोगों को पहचान सकता है। ऐसा मैं खुद भी मैंने देखा है कि हमारे बच्चे आगे आके अपने परिवार को नहीं पहचानते हैं, अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचानते, अपने स्टेट्स को नहीं पहचानते, अपने कंट्री को नहीं पहचान पाते हैं। तो हमारी जो शिक्षा है, हमारे आसाम में शंकरदेव शिशु निकेतन स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्कूल्स हैं। हमारी सबसे पहली शिक्षा कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज को पहचाने, हमारे राज्य को पहचाने, हमारे देश को पहचाने, जिसको हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। हम केवल उसको शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि शारीरिक शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा, हम कैसे भारतीय हो सकते हैं, हम अपने देश को कैसा प्यार कर सकते हैं, हम अपने राज्य को कैसे प्यार कर सकते हैं, ये जानकारी हम देते हैं। हमारे बीच में अभी विश्व गुरु बनने की बात आई है। पहले पुराना भारतवर्ष हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, उसको विश्व गुरु पहले था ही, हमारा देश पहले विश्व गुरु था ही। अंग्रेजों ने आके हमारे गुरुकुल पद्धतियों को सबको खत्म कर दिया। चाइना से, जापान से,
दूसरे दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे लोग आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। आप बहुत सी किताबों में बहुत अच्छे अच्छे वर्णन मिलते हैं कि हम लोग कितने डेवलप थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना आगे बढ़ा हुआ था। ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले यहाँ आके हमारे गुरुकुल को खत्म किया, हमारी सभ्यता को खत्म किया, हमारी संस्कृति को उन्होंने एकदम खत्म कर दिया, जिससे कि हम मन से, दिल से, मानसिकता से हम कभी आगे नहीं बढ़े। उन्होंने अपनी पद्धति लगाई, अपना एजुकेशन सिस्टम लगाया। आज भी हम उसी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उसी सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो 2020 की नई पॉलिसी आई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने एजुकेशन को अपनी मातृभाषा में पढ़ें। चाइना, जापान, जर्मन, फ्रांस, जितनी भी आप बाहर की कंट्री देखते हैं इतनी डेवलप्ड है, वो अपनी भाषा से आगे बढ़ा है। हम बोलते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई अपनी भाषा में नहीं हो सकती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन अभी हमारे भारतवर्ष में हम लोगों ने मेडिकल की शिक्षा अपनी भाषा में स्टार्ट की है, शुरुआत की है। ऐसा नहीं कह सकता। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। अपने यहाँ के अभी सभी शिक्षाविद यहाँ पे हैं, कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अभी तक हम कितना बिहाइंड हैं। हमारे बच्चे बांग्लादेश में जाके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाइना में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, यूक्रेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जब भी कभी न्यूज में सुनने को मिलेगा कि 10,000 बच्चे को यूक्रेन से लाना है क्योंकि वहां पे अटैक हो गया, बांग्लादेश में गड़बड़ी हुई, हमारे बच्चे 20,000 बच्चे वहां पे हैं। हमें अपने आप को एक सशक्त भूमिका में लाना है। हमारे देश के बच्चों के लिए एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को लाना है। जैसे हम अपने देश के बच्चों को यहाँ अच्छी मेडिकल की सुविधा कैसे दे सके, कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे सके, उसमें हमारा पूर्वोत्तर जनजाति का एक अच्छा कदम है। हमारी पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति की पूरी भारतवर्ष में अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, एजुकेशन का सिस्टम हम बढ़ा रहे हैं। दिन रात दिन हम एक लगन में लगे हुए हैं। हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स बना रहे हैं। हमारे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा के आचार्य इतनी कम सैलरी में वो दिन रात लगे हुए हैं। अभी हमारा एजुकेशन का सिस्टम अभी तक इतना बिहाइंड है कि जनजाति में, जो बॉर्डर में जनजाति है, उनको यहां तक कि अंक का मालूम नहीं है, किसको 5 बोलते हैं, किसको 10 बोलते हैं। जैसे पहले पौराणिक समय में हम लोग बार्टर सिस्टम, चावल के बदले दाल, दाल के बदले गेहूं, ऐसा सिस्टम था। वही सिस्टम में अभी भी चल रहे हैं। हमारा एक सफल प्रयास है कि हम बॉर्डर्स पे जाके उनके बीच में एकल विद्यालय के थ्रू शिक्षा का प्रसारण कर रहे हैं। कार्बी आंग्लम, कोकराझार हमारा बहुत ही प्रयास है और हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हमारे विद्या भारती के थ्रू हम लोग गुवाहाटी में प्राग ज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी लाने में कामयाब हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र होगा। अब मैं जैसा समझता हूं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है, 7 स्टेट्स के सभी बच्चों को मैं वेलकम करता हूं कि वो आए, देखें और कितनी फैसिलिटीज है, वहाँ आके पढ़े, आगे बढ़े। हमने हमारी विद्या भारती के थ्रू वहाँ पे हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए
बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर कोई कमज़ोर है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो हम उन लोग के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे साथ आज मुझे नागालैंड कोहिमा में आने का मौका मिला। हमारे एजुकेशन एडवाइज़र, और मैं उनको दोस्त भी बोलता हूँ, उनकी तो बहुत बड़ाई सुनता हूँ मैं हमेशा गुवाहाटी में, तो उनको सुनने का मौका मिला। हम तो चाहेंगे कि हम नागालैंड के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और उनको अवार्ड करें, सम्मानित करें। और ऐसा संभव तभी होगा जब आप लोग हमारे साथ हैं। आपका ऐसा आतिथ्य मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। मैं जब से कल से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।